नहीं है जी। अब ये सेकंड वीडियो हम लगा रहे हैं जो हमने कल रात को बनाई थी विदहोल्डिंग टैक्स इंक्रीज के हवाले से। तो उन्होंने एक पूरी डिटेल्ड वीडियोस की सीरीज पूरी बनाई है इस बजट के हवाले से, तो वो हम अपलोड करते रहेंगे। अब बस अभी अपलोड होने वाली है इसी के साथ। नाउ ओवर टू मिस्टर आसिफ कसबाती। चेंजेस विदहोल्डिंग टैक्स के सिलसिले में आई हैं और ऐसा महसूस होता है कि गवर्नमेंट ने आसान समझा है कि इस एरिया में चूंकि ये रेट लेना इजी होता है और विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट बहुत सारे हैं, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म नुकसान होते हैं कि अगर आप विदहोल्डिंग टैक्स रिजीम में ले जाएं और फिर इनडायरेक्टली वो मिनिमम टैक्स बढ़ जाए, एंड व्हेन वी से कि मिनिमम टैक्स बढ़ जाएगा तो वैसे तो ये डायरेक्ट टैक्स लॉ है, इनकम टैक्स का लॉ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी कॉस्ट जनरली पास ऑन हो जाती है और उस पास ऑन के नतीजे में बेचारा कंज्यूमर स्पेशली सैलरीड पर्सन भुगतता है जहां जहां मसला हो। इसके अलावा जाहिर है जो कंपनी एक्विजिशन कंपनी होती है जो सर्विसेज को एक्वायर करती है, ये गुड्स को एक्वायर करती है, वो उसको अल्टीमेटली फेस करना पड़ता है। ऑल्दो विदहोल्डिंग टैक्स इन रियल सेंस इनकम टैक्स है और जो रेलेवेंट प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज या प्रोवाइडर सेलर ऑफ गुड्स है उसके ऊपर एप्लीकेबल होना चाहिए। तो हुआ ये है असल में अलमिया कंपनीज के ऊपर 8% था, वो बढ़ा के 9% कर दिया गया है। और स्पेसिफाइड सर्विसेज लाइक ट्रेनिंग है, लाइक आउटसोर्सिंग सर्विसेज है, इसके ऊपर ओरिजिनली 2% था, वो बढ़ा के 3 हो गया, अब बढ़ा के 4 हो गया। और एक दफा अम्ब्रेला में स्पेसिफाइड सेक्टर को भी ले आए, हालांकि वहाँ मार्जिन बहुत कम होता है। फॉर एग्जांपल हमारी ट्रेनिंग सर्विसेज है जो इफेक्टिवली पहले जनरल रेट पे थी, फिर उसके बाद उनको 3% पे लाया गया और अब 4% कर दिया गया। इसी तरह से एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, उनका रेट इसी तरह से बढ़ गया। तो बहुत सारी स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं, तकरीबन 20 के करीब, उनके ऊपर 3% रेट था, वो बढ़ा के 4% कर दिया गया। तो इफेक्टिवली ये तमाम चीजें इन्फ्लेशन के डायरेक्शन में ले जाएंगी और जो तबाहकुन इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाएगा मजीद। इसी तरह से गुड्स के सिलसिले में रेट जो है वो 4.5% था, उसको बढ़ा के 5.5% कर दिया गया इन द केस ऑफ इंडिविजुअल एंड एओपी। और कंपनीज के केस में अब नया रेट 5% होगा। और जाहिर है हम सपोर्ट नहीं कर रहे एटीएल वालों को, लेकिन नॉन एटीएल वालों में यही रेट डबल हो जाएगा। आवाज बंद हो गई है, सब बाकी लोगों के साथ भी है कि मेरी आवाज बंद हुई है? आवाज बंद हो गई है सर, हमें भी नहीं आ रही। मेरे पास भी आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब बाकी लोगों को भी आवाज नहीं आ रही जी बॉस, एक्चुअली अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सेमिनार, तो इसलिए हम लोगों ने वीडियो अभी रोक दी है। बस अभी जमाल अनी साहब जो है इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर उसके बाद स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है जी वालेकुम जी, सलाम मैं सर। जमाल अनीस हूँ और अपने इस जो स्क्रीन शेयरिंग है उसको स्टॉप कीजिए ताकि मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकूं। एक मिनट। हाँ जमाल भाई, मैं आपको हो गई आप? मेरे ख्याल से शेयर हो गई है, देखिए। ठीक है ठीक है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2:45 पे हमने आज सेमिनार शुरू करना था, पोस्ट बजट सेमिनार। तो इसके लिए कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूँगा, और वो ये है कि ये पोस्ट बजट सेमिनार जो हैं कुछ पार्टनर्स हैं जिनके जो मिलकर इसको मैनेज कर रहे हैं। 786 टैक्स, मेमन प्रोफेशनल फोरम, प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स फोरम, पेफो,
और इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स एक्सीलेंस और ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन, ये जो हैं हमारी इन लोग पोस्ट बजट सेमिनार को मैनेज कर रहे हैं। ये आप जो हैं इसको जो मैनेज कर रहे हैं। इसके अलावा जब तक हम इसको फॉर्मली शुरू करते, बस मैं इस वेटिंग टाइम से फ़ायदा उठाते हुए आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके अगर कॉन्टेक्ट लिस्ट में कॉमर्स प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, इस तरह के लोग हैं तो उनसे लिंक शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका फ़ायदा हो सके, हम इस वेटिंग टाइम का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। चूँकि ये ऑनलाइन मीटिंग है तो कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि इस मीटिंग को स्मूथ रखने के लिए बड़ी ज़रूरी हैं। उसमें पहली चीज़ ये है कि ये हम फॉर्मली आपको वेलकम करते हैं। सेकेंडली ये है कि अपना माइक और वीडियो जो है वो एक दफ़ा चेक कर लीजिए ताकि आपको जब कहा जाए बोलने का और आपको इजाज़त हो तो आप बोल भी सकें और वीडियो भी आ सके। लेकिन कोशिश कीजिए कि ड्यूरिंग द सेशन आपका ये माइक और वीडियो बंद रहे ताकि डिस्टरबेंस ना हो और हमारे जो स्टीम्ड पैनलिस्ट हैं हम उनकी बात को सुन सकें। और हमारे चीफ गेस्ट जिनका मैं जिक्र करूंगा, हाँ, चैट बॉक्स में ये है कि आप कोई भी मैसेज कर सकते हैं। आपके होस्ट जो हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे, वो आपकी बात को सुनेंगे और आगे तक पहुँचा देंगे। और अगर कोई आपने फ्यूचर में भी हमारे साथ कांटेक्ट डेवलप करना है, जो कि हम ज़रूर चाहेंगे ताकि हमारी बाकी चीज़ें जो मुख्तलिफ फोरम्स पर हम कर रहे हैं वो भी आप तक पहुँचे, तो प्लीज़ चैट बॉक्स में अपना नाम और अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर ज़रूर जमाल भाई, लिखिए। आपकी आवाज़ डबल आ रही है, आप काइंडली चेक कर लें। ओके, मैं चेक करता हूँ। सर सिंगल ही आ रही थी हमारे पास तो। मुझे भी सिंगल कोई और भी बता दें। अस्सलाम वालेकुम, मुझे भी सिंगल आ रही है जी आवाज। जमाल साहब, साद बिन खालिद हियर, इट्स ठीक है, फाइन, ओके सिंगल सर, आवाज इधर है। मेन पार्ट पे है। ओके, थैंक यू सो मच साद भाई, इफ्तार भाई। सो चैट बॉक्स में हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि क्वेश्चंस वो भी लिखिए, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप होस्ट को डायरेक्टली अपना नाम, शहर, फ़ोन नंबर, क्वालिफिकेशन, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह ये ज़रूर लिख भेजिए ताकि फ्यूचर का कम्युनिकेशन आपके साथ हम लोग प्रॉपरली कर सकें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कॉमर्स प्रोफेशनल्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए बड़े हेल्पफुल होते हैं, तो ताकि आप तक टाइमली कम्युनिकेशन हो सके थ्रू दैट मीडियम यूजिंग योर ईमेल एंड योर व्हाट्सएप नंबर। तो जैसे कि मैंने अर्ज किया कि कोशिश कीजिए कि माइक ऑफ रहे until and unless कि you are asked to talk about certain things, और इसी तरह वीडियो भी, ताकि इंटरनेट डिस्ट्रप्शन और इस तरह की चीजें ना हो। आज का जो हमारा पोस्ट बजट सेमिनार है, इसमें इंशाल्लाह चीफ गेस्ट जो हैं वो रिस्पेक्टेड मिस्टर सैयद मोहम्मद शब्बर जैदी होंगे, जो कि फॉर्मर FBR चेयरमैन हैं और सीनियर पार्टनर हैं फर्गुसन के, और फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे ICAP के और साफा के भी। तो बड़े इस्टीम्ड, वेल नॉन पर्सनैलिटी हैं और इनसे काफ़ी कुछ हमें बड़ी डीप इनसाइट जो सीखने को मिलेगी। बहुत थोड़े वक्त में इंशाल्लाह हम इनसे बहुत कुछ सीखेंगे जो कि पाकिस्तान के लिए, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए अच्छा होगा, और करंट बजट के ऊपर भी इनके कमेंट्स हम सुनेंगे इंशाल्लाह। तो रिस्पेक्टेड सैयद शब्बर जैदी, मोहम्मद शब्बर जैदी इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद हमारे साथ हमारे दरमियान होंगे। इसके अलावा पैनलिस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं, इसमें सबसे पहले मैं तारुफ करवाना चाहूँगा जो हमारे मिस्टर हैदर पटेल हैं। ये आप इनकम टैक्स स्पीकर हैं, सीनियर टैक्स पार्टनर हैं EY पाकिस्तान के, और कोर टैक्स कमेटी जो PBC की है उसके ये मेंबर भी हैं। इसके साथ ही हमारे साथ इंशाल्लाह होंगे मिस्टर आसिफ हारून, हु इज़ FCA और इनडायरेक्ट टैक्स के स्पीकर हैं। ये टैक्स पार्टनर हैं फर्गुसन में और फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं KTBA के। मिस्टर अली लतीफ़ जो कि हमारे ICAP के प्रेसिडेंट भी हैं, ये रिस्पेक्टेड मिस्टर अली लतीफ़, आप चेयरमैन ICAP फिस्कल लॉ कमेटी भी हैं और पार्टनर मुनीफ ज़ियाउद्दीन एंड को हैं। आप भी इंशाल्लाह आज की डिस्कशन में हमारे साथ होंगे। इसके अलावा हमारे साथ होंगे मिस्टर अब्दुल कादिर मेमन जो कि पैनलिस्ट हैं और हमारे साथ होंगे, और पैटर्न पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन हैं, फाउंडर एंड चीफ एडवाइजर हैं A कादिर एंड कंपनी के। तो मेमन साहब ये भी हमारे साथ इंशाल्लाह होंगे। मिस्टर हबीब फखरुद्दीन, आप फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं
और ये भी पैनलिस्ट में होंगे। और ये सीनियर पार्टनर हैं आमिर आलम खान कंपनी के और मेंबर हैं टैक्स एडवाइजरी काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के और FBR के फॉर्मर मेंबर भी हैं। इसके अलावा हमारे रिस्पेक्टेड मॉडरेटर जो कि हमारे इन चीज़ों को रन करते हैं और हमारे लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज बिल्ड करते हैं जिनमें हम लर्निंग कर सकें और नई नई चीज़ों को सीखें और इन पर अमल कर सकें और अपने बिजनेसेस को प्लान कर सकें, कीपिंग एन आई ऑन द टैक्स मैटर्स। रिस्पेक्टेड आसिफ कस्बाती, आप फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, FCMA भी हैं और LLB भी हैं। आप मॉडरेटर होंगे हमारी इस पैनल डिस्कशन के। आप कोर टैक्सेस कमेटी मेंबर ऑफ PBC आप हैं और फिस्कल लॉ कमेटी जो ICAP की है उसके मेंबर भी हैं और कस्बाती एंड को के ऑनर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। तो ये हमारे पैनलिस्ट होंगे और आसिफ भाई इंशाल्लाह उनको मॉडरेट करेंगे। जो हमारा आज का सेमिनार है इसका स्केड्यूल क्विकली मैं आपके सामने रखता हूँ। 2:45 से 2:55 जो कि हमारा सेशन अभी चल रहा है और जिसमें 3 मिनट बाकी हैं, इसमें मैं आपके सामने कुछ गाइडलाइंस पेश कर रहा हूँ और एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम इंशाल्लाह इस सेमिनार में क्या करने जा रहे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह किरत और ट्रांसलेशन जो हाफिज अमसाल हमारे साथ मौजूद हैं उनसे होगी। वो किरत कुरान करीम की तिलावत करेंगे। वेलकम करेंगे साद बिन खालिद भाई जो हमारे दरमियान मौजूद हैं इंशाल्लाह। 3:05 से 3:30 तक इनकम टैक्स ब्रीफ बाय मिस्टर हैदर पटेल वो पेश करेंगे और 3:30 से 3:50 तक सेल्स टैक्स ब्रीफ बाय मिस्टर आसिफ हारून वो भी हमारे साथ होंगे और सेल्स टैक्स के हवाले से एक ब्रीफ पेश करेंगे। उसके बाद पैनलिस्ट डिस्कशन है जिसमें हमारे मॉडरेटर उसको मॉडरेट करेंगे और क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा। इसके लिए हमने 40 मिनट रखे हैं 3:50 से लेके तो 4:30 तक। और इसके बाद हमारे रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट जो हैं शब्बर जैदी साहब वो अपनी स्पीच देंगे और उनको हम सुनेंगे। आपकी गुफ्तगू जो है वो 25 मिनट की होगी 4:30 से 4:55 तक। और वोट ऑफ थैंक्स के साथ मिस्टर मुश्ताक की के वोट ऑफ थैंक्स के साथ हम इंशाल्लाह 5 बजे शार्प अपने इस सेशन को ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। ये क्विकली मैंने आपके सामने पेश किया। अगेन मैं ये बताना चाहूँगा कि ये हमारा जो सेमिनार है ये 5 एसोसिएशंस हैं, ग्रुप्स हैं जिनके हेल्प से हम ये कर रहे हैं, जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स एक्सीलेंस, प्रोफेशनल अकाउंटेंट फोरम, 786 टैक्स और मेमन प्रोफेशनल फोरम और कॉमेक्स ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन, ये इनके ताबून से हम अपने इस प्रोग्राम को करेंगे। इसका ब्रोशर आप तक पहुंचा है जिसके अंदर ये सारी तफसील तकरीबन थी जो मैंने आपके सामने बयान की। मैं उसको एक दफ़ा आपके सामने क्विकली उसको स्लाइड कर देता हूं और यही सारी चीज़ें जो हैं वो हमने तकरीबन आपके सामने पेश की हैं। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं हम उनका फॉर्मली शुक्रिया अदा करते हैं। तकरीबन जितने हमारे ये पार्टनर्स हैं इन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके नंबर्स ऑर्गेनाइजर्स के यहाँ मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सारे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से कि आपने हमें ये मौका दिया। सो इट्स 2:55 और अब मैं गुजारिश करूँगा हाफिज अमसाल से कि वो अगर अपनी बात आगे बढ़ाना चाहें तिलावत से, या कोई और अगर कोई कमेंट हो, आसिफ भाई लोग मौजूद हों तो मुझे बताइए। मैं अपने आप को म्यूट करता हूं और ओवर टू अदर फेलोज फ्रॉम प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स फोरम या अमसाल सर। हाँ, ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है सर, हो गया। इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ज़माने की कसम, इंसान खसारे में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, हक बात की नसीहत, सब्र की नेक अमल करते रहे, हक बात की नसीहत और सब्र की तलकीन करते रहे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी जमाल भाई, ओवर टू यू नाउ। ओके, जज़ाकल्लाह। साद बिन खालिद भाई वेलकम नोट आप पेश करेंगे। इसके अलावा साद बिन खालिद भाई के अलावा अगर आसिफ साहब मौजूद हैं या कोई और दोस्त कोई बात करना चाहें तो अदरवाइज हमारे पास कोई 2-1 मिनट हैं, फिर साद बिन खालिद भाई के वेलकम नोट से हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे।
अगर कोई और नहीं पार्टिसिपेट करता, मौजूद ना हो, तो फिर साद बिन खालिद भाई आप गुफ्तगू कर सकते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Honorable Chief Guest Syed Mohammad Shabbar Zaidi Saab, learned speaker Mr. Haider Ali Patel, Mr. Asif Haroon, and President of the prestigious Institute of Chartered Accountants of Pakistan, Mr. Ali Latif, honorable panelist Mr. Abdul Qadir Memon, Mr. Habib Fakhruddin, and moderator Mr. Asif Kisbati, and my fellow participants. So I formally welcome you to this post-budget seminar organized by Institute of Tax Excellence, Professional Accountants Forum, Memon Professional Forum, Old Students Association of Comics, and 786 Tax. So as Jamal Saab has already gone through with the schedule of this seminar, so the primary objective of this seminar would be to discuss the changes brought in by the finance bill presented yesterday by the finance minister Ishaq Dar. So the key features of the finance bill is of the budget is that the GDP growth rate has been reported to 0.3%, which basically has been declined as compared to the last year, which was 6.1%. The total budget outlay is approximately 12 trillion, with a decline in the per capita income of 1568 USD as compared to 1766. So this is just a brief of the overall outlay of the budget. With respect to the amendments brought in by the finance bill, which is yet to be approved, I would request basically Mr. Haider Patel Saab, if he's available, unless if Kisbati Saab wants to add something. So I basically, without spending any further time, I would request Mr. Haider Patel Saab, if he is available, to grace his presence, grace the seminar with his presence. Haider Patel Saab has joined, and let's proceed without spending time. We welcome Mr. Haider Patel. Thank you. Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum Asif Kisbati Saab. My congratulations to your whole team for holding this this seminar, for all professionals and people who are interested in discussing the finance bill, which was presented in the parliament yesterday by the finance minister. On the taxation side, whilst the target set for the next fiscal year is about 9.2 trillion Pak rupees, the current year is expected to close at around 7 trillion of tax collection by FBR, although the target is about 7.6 billion. But interestingly, what I found in the newspaper this morning, based on the budget speech, I don't think the official budget document is still out. I couldn't lay my hands on that. I looked at the FBR site, but there's the finance bill and related documents, notes and clauses, but not the main numbers on the budget. I couldn't actually find that, but based on the numbers presented by Business Recorder and other newspapers, it says that the fresh revenue measures that have been introduced in the finance bill, they will result in additional tax collection of 232 billion rupees. So the question arises that if the additional measures are 232 billion rupees, then where does the gap of about 1.8 trillion vis-a-vis the target and the current collection? Because there's a 2 billion rupee, at least 2.2 billion rupee additional collection if you take the target for this year to be reached at 7 billion. So we are supposed to end up at 9.2. So how is that going to be made, and how the 2 billion rupee gap will be met? That's something that one has to look at, and basically, I think with the press conference today, I'm sure there'll be a lot of questions to the finance minister, and perhaps we'll get an answer from there that what are the government plans to cover that gap in the tax collection target. So
Coming to the job that has been assigned to me today is to discuss the salient proposals on income tax that have been presented. So I have a Word document that I have prepared on some significant proposals. Can I share that on screen? Yes, you can. Okay, I think that will be easier and more to focus. Fair enough. Just the main You points. can share the screen. We are not sharing our screen. Okay. Go to top left blue part, top left blue part, and Yeah. then extreme left down lower part as a share screen. तो आपकी screen share Yeah, हो जाएगी. that I have done. I'm just searching for my document here. Budget, Pakistan. अल्हम्दुलिल्लाह 84 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है अभी तक, और बाकी लोग जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो वेटिंग रूम में हैं. उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमने बाकी स्पेस हमारे मजीद मेहमानों के लिए रखी है, इंक्लूडिंग शब्बर साहब. तो इसलिए काइंडली वो लोग वीडियो के थ्रू ज्वाइन कर लें, और मैंने मैसेज भी कन्वे किया है. हैदर साहब, आपकी स्क्रीन शेयर हो चुकी है. अब आप इस फाइल को, आप वर्ड की फाइल को आप ओपन करना चाहें तो ओपन कर सकते हैं. नहीं, सॉरी, मैं चेंज करूंगा, ये वाली फाइल नहीं है. स्टॉप हो गई शेयरिंग से? जी, हमारी तरफ से अभी स्क्रीन शेयर हुई नहीं है आपकी, लेकिन इट टेक्स फ्यू सेकंड्स. आई डोंट नो, जो डॉक्यूमेंट मैंने खोला हुआ है वो somehow मुझे वो शॉर्ट स्क्रीन उसका, हाँ, वो स्क्रीन, इसका इस तरह तरीकाकार है कि आप दोबारा से शेयर स्क्रीन का को प्रेस करें. एक्सट्रीम टॉप ब्लू कलर का आपका आ रहा होगा, एक्सट्रीम टॉप लेफ्ट ब्लू कलर. एक सेकंड सर, उसको सिलेक्ट कर लें. एक्सट्रीम टॉप लेफ्ट ब्लू कलर, चारों तरफ से राउंड ब्लू होगा, रेक्टेंगुलर. मेरे पास शेयर स्क्रीन एक ग्रीन एरो आ रहा है बीच में. शेयर स्क्रीन, वो इसी को प्रेस कर दें. जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. We welcome Mr. Abdul Qadir Maimun साहब as well, who is our panelist. अभी हैदर साहब शॉर्टली अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं based on his presentation on income tax. जी, कैन यू सी द डॉक्यूमेंट नाउ? Yes, now it is shared. और आप ये जो रिव्यू पॉइंट्स ऊपर जो ये मार्किंग आ रही है, अगर मार्किंग को अगर आप हटा सकें और स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लें तो इट विल बी इजीली व्यूएबल. इसको जूम प्लस कर लें. लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ योर लैपटॉप, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लें तो इट विल बी बेटर टू व्यू द सेम. मैं तो इस वक्त फुल पर ही हूँ. Can I help here? या प्लीज. Our team will manage. Okay, fair enough. Yes. So you can see the style sheet, the ABC, body text, etc. Na? So here at the left, you have clicked a button that is for the indent checking. Na? So you can just re-click this button, so the icons will be removed and text मेलिंग will के be नीचे visible. जो साइन आ रहा है, हाँ, उस exactly. पे क्लिक कर. मेलिंग के नीचे जो साइन आ रहा है उसको क्लिक कर लें. मेलिंग के नीचे, मेलिंग जी. टॉप के ऊपर मेलिंग के नीचे एक साइन आ रहा है,
इस जगह जहां सिग्निफिकेंट प्रपोजल आ रहा है इसके ऊपर एक साइन आ रहा है, सेम साइन इज देयर मेलिंग के नीचे, उसको क्लिक कर दे। Mailing is in the main menu above. मेन मेन्यू टॉप सेंटर में है मेलिंग, रेफरेंसेस के बाद, बिटवीन रेफरेंसेस एंड रिव्यू। पहले आप होम पे चले जाओ, होम पे होगा, आर यू ऑन होम? जी जी। अच्छा, होम पे आप ऊपर वाली सारी लाइनें देखो, होम के बाद AUI टेम्पलेट, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस एंड देन फिर आता है मेलिंग। सर मैं टोटली लॉस्ट। मैं तो, मुझे जो नजर आ रहा है वो तो आप लोग अभी, आप काले साहब आप नजर आ रहे हैं मुझे स्क्रीन पे। नहीं, मेलिंग से ऊपर नहीं, तो आप इसको जाओ होम पे, इसको माइनस करो, हमारी वाली स्क्रीन को माइनस करो, तो आपको होम की स्क्रीन खुल जाएगी। आप माइनस करो। बट चले आप इसके साथ शुरू करें, इसकी मेरे ख्याल में परसेंटेज बढ़ा दें, ऐसा कर चलें, कोई बात नहीं, रियली डजंट मेक एनी डिफरेंस। एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर, लोअर साइड के ऊपर जो मुझे तो इस वक्त वो डॉक्यूमेंट ही नजर नहीं आ रहा, मुझे आप नजर आ रहे हैं इस वक्त। अच्छा, ओके, अंडरस्टूड। आप जो है ना, फिर इसका मतलब ये है कि जो कादर साहब सजेस्ट कर रहे हैं ना, आपके पार्टिसिपेंट वाली में जो सबसे लेफ्ट वाला माइनस का साइन है, छोटे से छोटा, उसको Just 1 minute. पार्टिसिपेंट का आइकन है यहाँ पे। Okay, Heather bhai, can you just minimize the Zoom meeting and just open the Word document, right? Actually, आप आसिफ को मेल करते हैं, आसिफ को ईमेल कर दें। आसिफ मुझे ईमेल कर दें, अब मैं फौरन इधर से हमारे यहाँ से स्क्रीन शेयर कर लूंगा। अच्छा, मैं कर रहा हूँ अभी आपको। मीटिंग बहुत डिले हो रहा है, नेसेसरी लोगों का टाइम ज़ाया। नो इश्यूज, नो इश्यूज। मैं इन द मीन टाइम आसिफ को टच करता हूँ, आसिफ हारून साहब को। पहले इनडायरेक्ट कर ले आसिफ। ये आसिफ, तो आपके जीमेल एड्रेस पे कर दूं आसिफ कजवाली साहब? सारों पे कर दो, किसी पे तो पहुंच जाएगा। मैंने कर दिया। Actually, I am used to working on Teams, not on Zoom, so that's the problem. जी, मिल गया डॉक्यूमेंट? हेलो कजवाली साहब। जी, आ गया डॉक्यूमेंट। Heather sir, is it visible now? जी, it is visible. It is perfectly Okay, visible. you can proceed. आपको next करना हो तो just guide me and I'll next. I'll try to manage your. आप जिस तरह से आगे बढ़ेंगे, I'll manage to scroll down. So I think for everyone, I think before the budget came in, I think the biggest thing in the market and the controversy that was going on is कि जी reserves के ऊपर tax लग रहा है, and this emanated from a meeting of Reforms Commission जिसमें कहा गया कि भाई ये कोई proposal हुआ है, तो उसके ऊपर फिर speculation we also, and there was a lot of companies that they made the best efforts, उन्होंने अपना share capital वगैरह भी authorize बढ़वा दिया, and the preparation was that bonus shares will be issued by all these companies to basically safeguard themselves against any tax liability that may arise if their
accumulated profits or the reserves are subject to tax in this budget. But yesterday when the finance bill came, I think reserves pe to taxation nahi hai, but what we saw is actually a tax on bonus shares, which is going to be now, which is the bill proposes that it will be the issue of bonus shares will be treated as income. उसको income treat किया जाएगा और उसके ऊपर 10% tax propose किया गया है at the time of issuance of bonus shares, and the company that is issuing the bonus shares is required to deposit the tax within 15 days of issuance of bonus shares. और उनकी responsibility की गई है that they either collect the tax from the tax payer, and in the event that the taxpayer is not willing to pay the tax itself, then it is also authorized by the law कि वो उतने shares इनके जो bonus shares हैं वो इतने dispose कर दें जितना which are enough to fulfill their for them to pay the tax liability of the taxpayer. So effectively ये proposal है इस वक्त हम सबके सामने in the finance bill that the bonus shares is again going to be taxed. Historically also this was done back in 2014. ये लाया गया था इसके ऊपर टैक्स, और उस वक्त भी काफ़ी कैपिटल मार्केट ने इसके ऊपर बहुत ही प्रोटेस्ट किया था कि दिस इज़ एंटी कैपिटल मार्केट प्रपोजल. इस पे काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ, इस पे लिटिगेशन भी काफ़ी हुई थी, और फाइनली 2018 में फिर ये प्रपोजल जो बोनस की टैक्सेशन है और उसको जो इनकम ट्रीट करना था उसको विड्रॉ कर दिया गया था, और डेफिनेशन ऑफ इनकम में से बोनस शेयर्स के इश्यूएंस को निकाल दिया गया था. So now again after about 5 years this proposal is back, and corresponding amendments have been made in the definition of income to treat the issuance of bonus shares as income, and also इसको income from other sources में categorize किया गया under section 39, and mechanism is that a new withholding section 236Z is now being proposed, जिसके तहत 10% withholding की requirement है जैसे मैंने बताया पहले, or the company that is issuing the bonus shares is required to withhold the tax. This is the proposition on bonus shares that is before us. But surprisingly अगर reserves के ऊपर tax चूँकि नहीं आया अभी finance bill में propose नहीं हुआ है, so I personally do not feel कि जो all those companies that were thinking of issuing bonus shares by calling in urgent meetings and in anticipation those who had increased their share capital, I don't know how many of them will continue with their program to issue bonus shares. तो इस पे कोई significant revenue impact I don't know FBR का क्या इसके ऊपर estimate होगा कि हमें कितना tax मिलेगा, but I think traditionally those companies that issue bonus shares और जिनका bonus share issue होता है मेरे ख्याल में वही करेंगे अगर reserves की taxation की immediately कोई threat नहीं है. तो आई थिंक बोनस शेयर्स पे टैक्सेशन जो है वो मुझे तो इस वक्त थोड़ा सा लग रहा है कि ये शायद लोग ऑप्ट ही नहीं करेंगे बोनस शेयर्स के ऊपर द वे दे वर लुकिंग टू ऑप्ट इन केस के रिजर्व्स पे या प्रॉफिट फॉर द ईयर पे टैक्सेशन आता तो उस सूरत में. सो फॉर नाउ दिस इज द प्रपोजल. आई थिंक इफ दिस सेल्स थ्रू इट विल हैव टू बी सीन कि जी गवर्नमेंट को कितना इस पे रेवेन्यू मिलता है. आइटम नंबर 2, super tax is जो already imposed है, which has been a subject matter of litigation last year in the shape of 4C. उसमें सिंध हाई कोर्ट का डिसीजन टैक्स पेयर्स की फेवर में था, बट सुप्रीम कोर्ट के इस पे कुछ रिमार्क्स थोड़े से नेगेटिव है, बट अभी भी वो उसकी डिस्पोजल है. बट आई थिंक जो पार्ट उसका था सुपर टैक्स के ऊपर जो 15 सेक्टर्स के ऊपर जो टैक्स लगाया था उसको कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था. तो उसकी बेसिस के ऊपर अब जो अमेंडमेंट की गई है उसमें दोबारा 10% तक इसका टैक्स रेट बढ़ा दिया गया है, बिकॉज प्रीवियसली द 15 सेक्टर्स वर एक्सपोज्ड टू 10% टैक्स एंड द रिमेनिंग टैक्स पेयर्स हु हैड इनकम अबव 150 मिलियन रुपीस उन पे मैक्सिमम टैक्स जो था वो 4% था. एंड सो एनी कंपनी व्हिच वाज अबव 500 हु हैड इनकम 500 मिलियन दे वर सपोज्ड टू पे टैक्स एट 4%, बट नाउ उसको इनहेंस करके रेट्स को स्लैब्स इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं between 4 and 10%. there are about 4 slabs, so depending on the profitability I think अब 10% tax जो है वो attract होगा on companies that are having profits of 500 million and above. So and secondly super tax लास्ट ईयर जो था वो उस पे कुछ नोटिस आए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा आवाज अगर अपनी तेज कर लें, कुछ लोगों को सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, और बाकी जो व्यूअर्स जिनको सुनने में प्रॉब्लम हो रही है वो अपने एंड पे भी चेक कर लें. हम हमारे यहाँ देख रहे हैं तो इजी. Is it better now?
Yeah, it's better now. Thank you. Better. Okay. So the super tax that is now proposed for the next financial year, that has to be paid along with the advance tax installments by the taxpayers, which means that in their estimate of tax for the tax liability for as advance tax, they have to account for now super tax as well in their computation. So last year ये provision नहीं थी, but there were certain notices which were issued, but replies were given that this is not to be paid as advance tax, rather the law provided that this will be paid along with the return. But surprisingly, जो provisions हैं super tax के law के अंदर, that वहाँ there is a direction over there that this tax has to be paid along with the return. No such amendment has been proposed in the law to remove that line which says that the tax will be paid along with return. So if you are now asking them to pay it as an advance tax, so I think that anomaly should be that part of the law which requires you to pay it along with return, that has to be removed. Otherwise, advance tax में अगर चला जाएगा तो शायद return के time पे nominal या कुछ भी available नहीं होगा to pay with the return. Third important and very important significant जो amendment आई है वो ये आई है कि जो famous section 111 unexplained income or assets का जो section है, वहाँ पे इस वक्त there's a relief given in that section that if you bring foreign currency from abroad through official banking channels, and if your remittances up to and equal to 50 lakh rupees in a year, then no question can be asked by the tax officer that what is the source of this remittance that you received. This limit of 50 lakh rupees has been drastically increased, and now the limit is 100,000, equivalent of $100,000. Effectively, अगर आज का अगर आप रेट ऑफिशियल इंटरबैंक रेट भी लगाएं तो ये तकरीबन 28.6 मिलियन या 28.7 मिलियन या रफली अगर ओपन मार्केट रेट देखें तो तकरीबन 30 मिलियन रुपीस बन जाते हैं. तो it's almost a 6 times increase in the relief under 111. So I don't know what direction we are taking by allowing this, but I think it's a desperate measure to allow more dollars to flow into the economy, and by giving the taxpayer the room that no question will be asked to you. But I think this is a I think I would say an unfavorable decision from the documentation point of view, and from the point of view of those honest and documented taxpayers who are paying tax, legitimate tax on the income. Because अगर इस तरह अगर 30 मिलियन तक की अगर पैसे अगर बाहर से आ जाते हैं उस पर कोई सोर्स पूछा नहीं जाता, so that's a really blow to the people who gather their capital by legitimately paying the taxes. I think ICAP ने इस पे हमेशा पोजीशन ली थी, और ICAP की पोजीशन की वजह से और ऐसे कई दूसरे इदारों की वजह से, इंस्टीट्यूशन की वजह से ये लिमिट एक ज़माने में बहुत हाई होती थी, इसको कम कर करके 50 लाख पे आ गए थे. But again now with one stroke of pen, it's gone up by 6 times. So it's a significant move by the government, which I term it as an anti-documentary move. आगे चलते हैं. आई थिंक अ पॉजिटिव मूव, लिस्टेड कंपनीज को थोड़ा सा बेनिफिट दिया गया. मिनिमम टैक्स का रेट उनका 1.1% कर दिया गया इंस्टेड ऑफ 1.25%, व्हिच इज द जनरल रेट ऑफ मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113. तो ये एक इंसेंटिव दिया गया लिस्टेड कंपनीज को कि उनकी टैक्स लायबिलिटी अगर मिनिमम टैक्स होगी तो उस पर उनको अबाउट 20% टैक्स लायबिलिटी उनकी कम हो गई. इफेक्टिवली अगर 0.25 कम कर दिया गया उनकी लायबिलिटी से. So again, a positive move by the government to support the capital market and the listing of companies. Scope of associates को मैं briefly discuss कर लेता हूँ. Scope of associates में the current definition of associates has been changed significantly, and now if you have a transaction with a person who is based in a jurisdiction where there is a zero tax regime, basically उस relationship को between you and that person automatically law ने capture कर लिया है कि you will be treated as an associate. So when you are an associate, your transaction can be probed under 108. The tax officer has the authority to see whether what income is being earned by whom, and in the transaction estimate how much profit should be taxed in your hands, how much profit is the other person declaring, and many questions can come up in that situation.
So basically, this is a departure from the standard basically practice of in international best practices of how you view an associate. So I think time will tell, when this issue is, examined and used by the tax officers, and then how this goes along. So let's see how this goes on. But this is a significant amendment from the prospects of dealing with non-residents abroad that may affect certain legitimate transactions which are held with other parties who may be in zero tax jurisdictions. Can we move forward, Asif sir? जी, another थोड़ा सा ऊपर 6 के बाद 7 पे आ जाए, 7 पे नीचे जी. So in order to increase the tax collections, I think the FBR has taken it the easy way. So a lot of tax rates have been enhanced. For example, the rate on commercial importers under Part 3 of the 12th schedule, read with Section 148, that has been enhanced from 5.5% to 6%. This 0.5% increase in terms of imports is a significant revenue for the FBR, and obviously an additional burden. And obviously commercial imports में यही होता है कि जो भी tax at import stage कटता है, that is treated as a final cost, and it is passed on to the end consumer. So obviously this will result in again inflationary pressure, which we are already facing. Similarly, payments to residents and permanent establishments of non-residents के जो rates हैं Section 153 में और Section 152(2)A में with regard to supply of goods, rendering of services, execution of contracts, all these existing rates have been enhanced by 1% across the board on all these type of payments. So all this again is going to increase the cost of doing business, and the burden obviously will go ultimately to the taxpayer. Certain benefits have been provided I'll not jump onto sales tax, but I'll take you to some other provisions which I have not highlighted in this document, but I can go through with you with some of the documents quickly. हजरत इस डॉक्यूमेंट को आप बंद कर दें, इसमें जो मैं पॉइंट्स आगे कवर कर रहा हूँ वो इसमें नहीं है. बैंकिंग के हवाले से सेक्शन 4C जो सुपर टैक्स था, उसकी लास्ट ईयर अनॉमली थी कि टैक्स ईयर 22 में उनके ऊपर नहीं लगना था 4C, 22 में उनके ऊपर 4B लगना था और 23 में उनके ऊपर लगना था. तो बट वो थोड़ी सी 7 शेड्यूल चूंकि एक सेल्फ गवर्न प्रोविजन है, तो वहाँ पे 4C को इनेक्ट नहीं किया गया था या रिक्वायरमेंट नहीं थी कि 4C के अंदर आप टैक्स पेंगे. वो आई थिंक करेक्टिव अमेंडमेंट ये ले आए हैं इस साल, which makes it clear that for tax year 2023 banks will have to pay super tax under section 4C. इसके अलावा बैंक्स के अंदर जो इस साल से जो रेट है टैक्स का वो 39% इन्विजेज्ड है. 39% के हिसाब से they will have to pay tax, but जो एडवर्स ADR जो एडवांस टू इक्विटी जो रेशो के हिसाब से जो टैक्स लेना था वो इस साल 1 साल के लिए उसको सस्पेंड किया हुआ है. नेक्स्ट ईयर अगर ये प्रोविजन रिमूव नहीं की गई तो जिनका ADR रेशो एडवर्स होगा they will continue to pay tax at a higher rate, which means from tax year 24 onwards. तो ये एक significant बात है. दूसरा ये है कि if they start lending to the IT sector to promote lending to the IT sector, इनको माइक्रो फाइनेंसिंग स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के तरह IT एंड IT enabled सर्विसेज जो लोग रेंडर कर रहे हैं उनको फाइनेंसिंग प्रोवाइड हो जाए बैंक से, तो उसके लिए इंसेंटिव दिया गया है कि फॉर सच फाइनेंसिंग if the bank provides lending to such taxpayers who are involved in rendering IT and IT enabled services, तो उस पे बैंक्स को जो टैक्स में छूट दी गई है वो ये है कि they will pay only 20% tax on income arising from such lending business to IT and IT enabled service providers.
ये एक इंसेंटिव दिया गया है बैंक्स को टू प्रमोट लेंडिंग टू आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सब सेक्टर, बिकॉज गवर्नमेंट का फोकस है कि इस सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज की उम्मीद है, तो उसको उनके लिए फाइनेंसिंग अवेलेबल करने के लिए भी ये प्रपोजल लाया गया है। इसके अलावा एक टैक्स क्रेडिट इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, जिसमें इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए ये क्रेडिट अवेलेबल है कि इफ़ ही इन्वॉल्व्स हिमसेल्फ इन कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू हाउस, तो उसके ऊपर उनको 10% ऑफ टैक्स असेस फॉर द टैक्स ईयर, और आई थिंक उस पर लिमिटेशन भी है कुछ मैक्सिमम अमाउंट की, आई एम मिसिंग दैट समवेयर। उसके तहत इनको टैक्स क्रेडिट मिलेगा फॉर इन द ईयर इन विच द हाउस इज कंप्लीटेड एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन्ड बाय द पर्सन, तो वो टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। सो अगेन एन इंसेंटिव टू प्रमोट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन द कंट्री, बट इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका जो प्लान है कंस्ट्रक्शन का, वो इट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द कंसर्न अथॉरिटीज ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 23। यानी पुराना अगर आपने ऑलरेडी कोई कंस्ट्रक्शन प्लान वगैरह लेआउट कर लिया है तो उसके लिए नहीं है, बट गोइंग फॉरवर्ड इफ समबडी प्लान्स अ हाउस एंड आल्सो कंप्लीट्स इट विद इन, बिकॉज दिस क्रेडिट इज अवेलेबल बिटवीन 2024 and 26, so maximum you have to do the completion within this stipulated period to be eligible to get this credit. इसके अलावा पास्ट में हमने देखा कि एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट इनकॉर्पोरेट किया गया लॉ में, जिसमें स्पेशली दिस केम फॉर द रिकॉर्डिक ट्रांजैक्शन, जिसमें ऑब्वियसली द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वाज फेसिंग अ पेनल्टी इशू फॉर नॉन कमिटिंग टू एन एग्रीमेंट इन द इंटरनेशनल कोर्ट। तो उसको thwart करने के लिए बेसिकली the government had entered into an agreement with the concerned parties, and they've been given widespread protection against taxes, duties, levies, very very widespread, और वो in the shape of Foreign Investment Promotion and Protection Act 2022। तो इसकी corresponding जो income tax की exemptions हैं वो section 44A इंट्रोड्यूस किया है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने भी इस फाइनेंस बिल के तहत, टू गिव प्रोटेक्शन इन कॉरेस्पॉन्डिंग लॉज। तो ये सब लॉज में आया है, सेल्स टैक्स में भी आया है, एफईडी में भी आया है, आईसीटी लॉ के अंदर भी आया है, जहाँ जहाँ इनको प्रोटेक्शन फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट में दी गई थी, उन लॉज में अमेंडमेंट आ गई है। तो इनकम टैक्स में सेक्शन 44A के तहत इनको एग्जेम्पशंस वेरियस टाइप्स की दी गई है, नॉट ओनली टू द इंगेजिंग कंपनी विच विल डू द बिजनेस in that project, but also to the shareholders and directors and many more. There's a long list of it. हमने अपने comments में डिटेल में इसके ऊपर सारा दिया है, तो comments will be available very shortly on the group and everywhere else. Recovery of liability outstanding under other laws, ये एक anomaly थी कि for example laws like CVT का लॉ था या WWF का लॉ था या WPF का लॉ था, तो वहाँ लिखा गया है इन लॉज में कि जो mechanism of assessment and recovery of tax that will be adopted by income tax, but इसका I think in one of the cases CVT के ऊपर कोई recovery हुई थी, उसमें ये बात आई थी कि corresponding law नहीं है income tax के अंदर to give cover के whether under the income tax law the income tax officer can go and collect the tax which are due under those laws. तो I think उसको एक enforce करने के लिए section 146D इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसने enable किया है tax authorities को कि they can collect taxes and levies which are due under other laws, those laws which say that the tax will be collected under income tax regulations. तो उसको corresponding authority दे दी गई है income tax law के अंदर। इसके अलावा एक जो थोड़ी सी मुझे नेगेटिव अमेंडमेंट नजर आई वो ये है कि डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर जो फॉरेन पेमेंट्स होती हैं उसके ऊपर विदहोल्डिंग एडवांस टैक्स था 1%, उसको बढ़ा के 5% कर दिया गया है। By and large, if you are saying that the credit and debit card is only used for luxury payments, then perhaps this advanced tax collection could be fair. But I think in many cases, these debit cards and credit cards are used to pay off education fees, like Cambridge के एग्जाम्स होते हैं या ACCA के एग्जाम्स होते हैं। इसके अलावा मेडिकल के लिए भी लोग यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर इसको फ्रॉम अ लग्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लगाया गया कि ये यूज जो है लग्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है डेबिट क्रेडिट कार्ड पे, तो देन एटलीस्ट मेडिकल और एजुकेशन पर्पस के लिए आई थिंक इसमें गवर्नमेंट को एग्जेम्पशन इंट्रोड्यूस कर देनी चाहिए कि इन वैसी पेमेंट्स के ऊपर ये फिर नहीं होनी चाहिए कलेक्शंस के ऊपर।
इंपोर्ट्स को हमने डिस्कस कर लिया, रेट्स ऑन सर्विसेज के ऊपर और गुड्स के ऊपर हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। इसके अलावा रीट की एग्जेम्पशन लॉ में 30 जून 2023 को एक्सपायर हो रही थी क्लॉज 99A में। दैट हैज बीन नाउ बीन एक्सटेंडेड टू 30 जून 2024। So I think this is a welcome amendment because REIT is is something which can really spur economic activity. अगर REIT के through अगर development होती है and construction activity comes up, then this is a positive step. I think बजाय 1 साल के I would have said कि अगर इसको एक ही दफा में 2 साल या 3 साल बढ़ाते तो ज्यादा बेहतर था, because 1 year window is quite a show, but it's still something is better than nothing. expire हो रही थी, 1 साल बढ़ा दिया उन्होंने इसको। इसके अलावा आई थिंक आसिफ साहब मैंने मेजर सारी चीजें जो आई थी वो कवर कर ली है। अगर कोई चीज रह गई होगी तो कोई क्वेश्चन आंसर में एक दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। हैदर साहब, देयर इज नो इशू, और आसिफ साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है और शब्बर साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपने अपना पार्ट वेल कवर्ड कर लिया है। बाकी को हम आप भी शरीक रहे हमारे साथ पैनल डिस्कशन में कवर कर लेंगे। थैंक यू। ओके, लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स आसिफ हारून साहब। अस्सलाम वालेकुम शब्बर साहब। अस्सलाम वालेकुम शब्बर साहब। जस्ट वेट फॉर फ्यू मोमेंट्स। हम लिएज कर रहे हैं विद आसिफ हारून साहब एंड शब्बर साहब हु आर अबाउट टू ज्वाइन। और वैसे आसिफ हारून साहब ने ज्वाइन कर लिया है, तो वो अपना माइक ऑन कर सकते हैं और अपनी वीडियो